Okay, so it's recording. I just learned that I have to inform if I'm recording somebody. डेट मतलब हो कैसे रहा है उनको समझ नहीं आ रहा लेग So here, if you can see my leg, right? So what is happening is that's the problem with Zoom. Zoom was not designed for this type of meeting. Anyway, so this is the rotation that is happening. ओके ओके Right? so this is what is the question So rotation is happening at which joint? This rotation that I just showed you is happening at which joint? ankle joint What? ankle joint So how do we decide whether which joint it is happening at? Now you try and do it. You try and do it. I'm doing it so because I'm moving my ankle right and left so that's why the rotation is happening. Okay, if you fuse your ankle, if the ankle is in a cast, imagine if the ankle is in a cast, will you be able to do that rotation? No. So let's look at it here. If my leg is here, right? If my leg is here, right? Now if my leg is in the cast, am I going to be able to do this movement? No, sir. Why not? So you can imagine this. Let's imagine this, right? So this becomes your foot, this becomes your leg, and rotatory movement is happening like this, right? So if I fuse this joint, just like how I have right now, for holding purpose, it's still fused. It's still the movement is happening. Okay. So that we can now safely say that ankle joint पे नहीं हो रहा. So let's move up. उसके ऊपर कौन सा joint? Knee. Okay. What do you think? It's happening at knee joint? Why not? So because The first obvious reason is knee joint is which type of a joint? synovial joint. हाँ, synovial. But in terms of movement classification में, it is which type of a joint? So movement classification में how many types of joints are there? Flexion and extension. No. Well, okay, sorry, that was wrong. Not movement classification, structural classification. While we were, which type of joint? If you remember last time, hinge. Exactly, right? It's a hinge. Now, hinge type of a joint has how many degrees of freedom? Or how many? Hinge joint moves in how many directions? Hinge joint moves in one plane. One plane. So 2 degrees of motion. Right? Only flexion and extension. Can you hear me? Joint moves in one direction. Two directions.
front and back. Front and back मतलब. Yeah, so flexion extension. So it has 2 degrees of motion. Okay. Right. So now this movement that is happening, this rotation movement, does it come in the realms of Degrees of knee? motion, 2 degrees of हाँ, movement. हाँ उसमें आता है ये. हाँ फिर तो आएगा मतलब अगर ऐसे देखे तो अगर 2 डिग्रीज है और हाँ तो 2 डिग्रीज तो उसका फ्रंट एंड बैक है. दिस इज सर्कमडक्टरी यानी रोटेशन, तो वो नी जॉइंट में आता है. डिग्रीज ऑफ मोशन सबके लिए अलग अलग है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 2 डिग्रीज ऑफ मोशन देन इट्स आइदर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन और एडक्शन एंड एबडक्शन और प्रोबेबली हाँ दूसरा क्या हो सकता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन एबडक्शन, राइट. सो knee is only designed for flexion and extension, but the circulatory or circumduktory movement or rotatory movement does not come in the expertise of the knee, right. अगर आपको दरवाजे का हिंज को रोटेट करना है तो आप नहीं कर पाओगे, right. So this circulatory movement, now is it safe to say that it does not happen at knee joint? it does not happen anymore. Right. So it does not happen at ankle joint, it does not happen at knee joint. What, let's move further up, because नीचे तो जाने का कोई मतलब ही नहीं. नीचे तो obviously we know कि कोई और joint है ही नहीं. joint है but वहां पे तो work करेगा नहीं. तो let's move up. अब next कौन सा joint आएगा? कौन सा? वो जो लेग की कॉर्नर वाला जो अपन ने कौन सा नाम है उसका, थाई ट्रोकैंटर. No, joint. I'm not. No, I'm talking about the joint. Which joint is that? नी के ऊपर कौन सा joint आता है? नी के ऊपर जॉइंट मतलब मैं इसमें भी देख रही हूँ बट मुझे वो जॉइंट So if we go here, which joint is this? If you can see, which joint is this? This abduction adduction. No, joint. Which joint is it? Here. वही मेरे को लग रहा है कि joint. ये joint कौन सा है? This is wrist. हाँ, ये कौन सा joint है? सर वो रेडी नहीं joint. Which joint is it? Elbow. हाँ, फिर ये कौन सा joint है? Shoulder. Yes. तो similarly ये कौन सा joint है? This one. Perfect. Ankle, right? Ankle joint. हाँ. उसके ऊपर ये कौन सा joint है? Knee joint. हाँ, उसके ऊपर ये कौन सा joint है? भाई ये joint का मुझे नाम नहीं पता. Pelvic girdle तो अलग हो गया. या pelvic girdle. pelvic girdle तो उसके ऊपर होता है. यही वाला joint का नाम नहीं पता मुझे. Hip joint. Sure. ये ना. हाँ, so that is the hip joint. Hip joint. Okay. Right? उसका I thought कोई नाम होगा. नहीं. Right? So वो आपका hip joint हुआ. Now उसके ऊपर तो कोई joint है ही नहीं. नहीं. So this rotatory movement happens in which joint? Hip joint. Perfect. Now once we have established कि hip joint पे ये movement हो रहा है, let's look at another question. is ये movement कौन से plane में हो रहा है? Okay. So it is this rotation. Transverse plane. Perfect. Too good.
Okay. अब उसके नीचे the lady with a very explicit image is doing with her hands. Pronation, supination. Yes. That happens in what plane? So this supination, pronation. ये कैसे पता चलेगा? Like this is palm. एक second. बताती हूँ. नहीं आ रहा समझ. Here, supination, pronation, supination, pronation. Given you hint. Now try and figure it out. वो तो मैंने फोन से भी करी थी कि ये supination भी pronation. No, do it with the pen because pen becomes the hand of the clock. हाँ, but like this. आप ऐसे करते ना? No, like this. Okay. मैं ऐसा करूंगा तो ये तो एकदम चीज ही अलग हो जाएगी. Right? So, anatomical plane में happens like this, like this. हाँ. Okay, okay. एक second. So to do that, to imagine the plane behind it, what you have to do is you have to tick it like a clock. Sagittal plane. If I'm ticking it like a clock, like this, where is the watch of the face? A face of the watch, sorry. पीछे. So this becomes which plane? Frontal plane. There you go. Okay. Right. Right? Okay. Now, the lady next to it, the movement which says circumduction. It happens in what plane? Circumduction is this, na? Yes. This is, I think, it is nothing like that. This is happening like this, sagittal plane. Perfecto. All right. Let's move on. Let's move on. Let's move on. What is secondary curve? What is primary curve? Primary curve is also known as kyphosis. मुझे Okay. kyphosis kyphosis is also known as inverted C and वही concave anterior से देखे तो concave posterior से देखे तो convex Okay. and the normal C, normal C is lordosis. Okay. So which is the primary curve and which is the secondary curve? The
primary curve is एक second. Primary curve is thoracic and नहीं ये दोनों में से you're saying lordosis and kyphosis, are two curves. So which one is primary and which one is secondary? तो सर ये सर्वाइकल थोरैसिक लंबर सैक्रल में बताना ना मुझे कौन से प्राइमरी है कौन से सेकेंडरी है, राइट? हाँ ऐसे बताओ, ठीक है ऐसे बताओ. तो सर जैसे सर्वाइकल से लंबर इज सेकेंडरी, सर्वाइकल से लंबर तो थोरैसिक, थोरैसिक और सैक्रल इज प्राइमरी. परफेक्ट. तो सर्वाइकल से लंबर नहीं होता, सर्वाइकल एंड लंबर. हाँ. क्योंकि बीच में थोरैसिक आता ना. ऑलराइट, एंड व्हाई आर they classified one as primary and one group as secondary? Why so? One second. Hello. हाँ पापा. हाँ वो कर दिया ना, मैं तो कर दिया था. हाँ दोनों. मैं होम थिएटर में हूँ, मतलब मेरी क्लास चल रही है. सर एक सेकंड, आई विल बी बैक, 1 मिनट. हाँ. Yes. Okay. So why one group is classified as primary curve and why second group is classified as secondary curve? One group is classified as Fetus? हाँ फीटस का तो है ही, मतलब दैट इज अ सेकेंडरी फीटस, राइट? What? सर वो फीटस तो जैसे मतलब नहीं सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी, इन द वूम्ब ओनली सर वो सी ऐसे ही रहता है, so that's called as primary curve. Which curve ऐसे ही रहता है? Kyphosis. Okay. Or the thoracic or the okay. So kyphosis is primary and sacral is primary because they both remain in the same position even in the fetus and even in an adult or a baby. Whereas when we become adults or when we are born, the cervical and the lumbar changes. Perfect. Okay. Now, what is called the covering of the bone? Periosteum. Perfect. Covering of the muscle. Epimysium. Okay. नहीं. So there are three. हाँ. Perimysium, endomysium, and epimysium. Perimysium is the central. And epimysium. Endo is in, अंदर. Endo is सबसे अंदर वाला. Epimysium is covering of the muscle.
परफेक्ट. सर थोड़ा आगे पहुंचना चाहिए. मैं कर लूंगी, ट्राई वापस रिवीजन करने का, बट हम आगे पहुंचने. ठीक है, चलो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द हार्ट. हाँ. Heart receives blood from the veins and propels it into the arteries. It is located near the center of the thoracic cavity and is divided into 4 chambers: right and left atria, right and left ventricle. It is enclosed by connective tissues of the pericardium and in the mediastinum. Anatomy: the atria lie superior to the ventricle. Okay? The coronary sulcus marks the border between the atria and the ventricle. Because मतलब मैं इसका it marks the border because blood वापस atria में नहीं जाए इसलिए, right? Exactly. The atria have thin muscular walls and when not filled with blood are called durochal. Atria have thin muscular walls and when not filled with blood are okay. The ventricle have thicker muscular walls. The interventricular sulcus marks the boundary between the left and right. The great veins and arteries of the circulatory system are connected to the base of the heart. The great veins and arteries मतलब? So veins and arteries are usually small. Great क्यों लिखा है? हाँ, so you can imagine a tree, right? So trees branches are, you can imagine as veins and arteries, but the trunk of the tree, right? We cannot say in cases of arteries and veins, we cannot say trunk. Although all the veins and arteries branch from either the pulmonary vein or the aorta, right? But the pulmonary vein and the aorta are the trunk. Those are the thickest and the biggest. उसके अंदर से सब ब्रांचेस बाहर निकलती है, या तो सारी ब्रांचेस कन्वर्ज उसके अंदर होती है. सो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, aorta, they are all known as great vessels because they are the thickest, they are the biggest. The apex lies inferiorly at the top, at the tip of the heart. Okay. The apex lies where? Tip of the heart, मतलब up. कहाँ पे? हाँ. So I am at the center of the heart, right? You can see the cursor. Now where do you want me to move? Sir, अगर नीचे apex is top. But what does it say? Again, read the 8th point. The apex lies. Okay, sir, नीचे. हाँ. नीचे जो curve है, that is apex. Yes. Yes. Huh? Internal anatomy: the right atrium receives blood from the systematic circulation through the superior inferior vena cava. Vena cava. Vena cava. Vena cava. The coronary veins. Sir, coronary veins कौन सी थी? Coronary veins. Coronary means जो हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है उसकी वेन. So coronary arteries, if you can see here, these are coronary arteries. And similar to this, they are coronary veins that empty into superior and inferior vena cava. So जो blood vessels heart को blood supply करते हैं, because heart also needs blood. Coronary veins return blood from the myocardium to the coronary sinus, which opens into the right atrium. Each atrium communicates with the ventricle on the same side by way of an anteventricular valve. The right AV valve is a
tricuspid valve. The left AV valve is a bicuspid valve. Each cusp is braced by chordae tendineae, which are Chordae connected to tendineae. papillary muscles. The unoxygenated blood leaving the right ventricle flows through the right semilunar valve to the pulmonary artery. Oxygenated blood leaving the left ventricle flows through the left semilunar valve to the aorta. I think इतना ही रहेगा. So ये internal anatomy is. सर ये सब डीप में जाना जरूरी है क्या? This is superficial. This is not deep. This is just the this is just us knowing that blood कहाँ से कहाँ जाता है, कैसे जाता है, और उसके ऊपर ऊपर के स्ट्रक्चर्स क्या है. क्योंकि हाँ मतलब ये तो जैसे पता ही है ना कि राइट एट्रियम से जाता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, एंड देन राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है वेंट्रिकल, एंड देन वो पूरी बॉडी में जाता है. आई थिंक ये इनफ है. हाँ, okay, but we also need to know the valves. So we have one is bicuspid valve, one is tricuspid valve, and one is semilunar valve. Right? So bicuspid, tricuspid, bicuspid is the atrioventricular valve. Tricuspid is the left atrioventricular valve. Bicuspid is the right atrioventricular valve. Right? And then we have aortic valve and we have pulmonary valve, which are semilunar valves. Right? Any confusion here? Because these the questions इसमें से आएंगे. Alright? कोई बात नहीं. What we'll do is ये जो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और एक बार हम फिर से देख लेंगे कि आप में सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. आप दिन में एटलीस्ट one time before we start this our next lecture, try to just go through. हाँ नहीं सर, मैं एक्चुअली मैंने आज देखा था, ट्राई किया था, बट मैं आपको बताऊं यूट्यूब में मुझे आपका अब वो ही नहीं दिखा रहा है. पेज ही नहीं दिखा रहा है. हाँ, लाइक से दिखा रहा है. मैंने आपका नाम डाला. सी मैंने ट्राई किया था बट इसमें कुछ नहीं दिखा रहा. तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट में मेरा नाम है आपके? आप तो सब्सक्रिप्शन में तो आपका दिखा ही रहा है. ओके चलो कोई बात नहीं, मैं ना लिंक शेयर करना आपके साथ शुरू करता हूँ सब्सक्रिप्शन में. हाँ, अब आपको सारे दिख रहे हैं? ये दिखा. हाँ मोस्टली. Yes. 7 is the latest one. हाँ 7 is okay. ठीक है ना? ठीक है. Circulation through the heart. Blood from the periphery flows through the heart according to the following sequence: superior and inferior vena cava, right atrium, tricuspid valve, right ventricle. ये सब blood from the periphery flows through the heart according to the following sequence: superior and inferior vena cava, then right atrium, then tricuspid valve, then okay. सर ये वेना कावा बता दो बस मुझे. ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा. ओके. ये दोनों इधर, अगर आपको इधर होल भी दिख रहे हैं, ये दोनों इधर आके एम्प्टी होता है. हाँ. राइट एट्रियम. राइट. हाँ
right atrium में फिर tricuspid valve is a part of the right It is atrioventricular, right atrioventricular valve. हाँ. Then right ventricle, then pulmonary, semilunar valve, pulmonary arteries and lungs. Perfect. Okay, so ये right side का बताया है. अब next में से निकल के जो blood circulation होता है वो left side का. Left pulmonary vein, left atrium, bicuspid valve, left ventricle, aortic semilunar valve, ascending aorta and systematic circulation. ये multiple choice में 99.9% होगा. Which of the following is the correct circulation? So exactly यही होगा. One of the right answer would be following sequences: superior inferior vena cava, right atrium, tricuspid valve, right ventricle, pulmonary semilunar मतलब ये लोग valve. shuffle करके भी दे सकते हैं ना? हाँ. Wow. Right. हाँ. But once you have the imagination, once you have the understanding, and once you know each and every structure by visualization, just like how you do, you will not get confused. Is people who will get confused is people who have mocked it up. Definitely. And that's how these guys are very smart in isolating people who have understood and people who have mocked it up. Sir, That's why we are spending so much time. हाँ, but हमेशा mostly 50% समझा है और 50% को ऐसे फास्ट बस दिमाग में बिठाया है. कौन सा? In my studies, in my whole life, in my graduation, it's the first time I'm पूरा proper समझ रही हूँ. Because I'm getting पढ़ाई में तब इंटरेस्ट नहीं था इतना. So it's like it's good. मतलब अभी इससे पढ़ के भी मतलब समझ आ रहा है कि अब वो पढ़ के समझ आ रहा है कि वो उधर से आ रहा है फिर राइट एट्रियम में आ रहा है. एग्जैक्टली. राइट वेंट्रिकल. क्योंकि वो इमेज आपके दिमाग में दौड़ रहा है इसके साथ साथ. और जब ये करना शुरू हो जाएगा, that means you can consider yourself at a higher level. Because again, just for GK, right? For nuclear physicists or for theoretical physicists, right? People like Albert Einstein, right? He devised the theory of general relativity where he had no example, no visualization. Although he visualized a scenario and said, in my visualization, something is not fitting right. And that's how he devised the theory of relativity, general theory of relativity, right? So those guys who can just imagine things, obviously they have this just natural brain ability to imagine things, but those are the guys who can take things and absorb things very quickly and to the very next level. So that's a visual initially. For the basic foundation, for the basic stage, visual perception and visual learning is very important, I believe, for most of the people. Some people, they don't need any visualization, they can just imagine things right out of it, right? But most of the people, when they're given that visual feedback about the text and the visual stuff, and when those things start matching, then you can imagine, okay, chalo, ab aapki gaadi right track. Right. It's just matter of time and pace. That's it. Patience also. Exactly. Right? Okay. Sure. The circulatory system, blood vessels. First one is arteries. Arteries are muscular walled vessels that carry blood from the heart and decrease progressively in the size to become arterioles and then connect to capillaries. Capillaries are the vessels composed of one cell layer that functions to exchange nutrients and waste material between the blood and tissue. Okay. Veins
पहले एक ही करके पढ़ते हैं, आर्टरीज पढ़ते हैं. हाँ. So arteries में you see that the arteries they then slowly पतले होते जाते हैं and they convert into capillaries, right? अगर इसका और अच्छा पिक्चर देखना है तो गूगल एक कर लो, you'll be able to see it much clearly. ओके अभी कौन सा अच्छा इमेज है देखते हैं. Let's try and see this works. Okay, so now these are the great vessels here close to the heart, and then they divide. As far as arteries are concerned, arteries divide and veins they converge because arteries are taking blood away from the heart. तो अगर दूर जा रहा है और आप देख रहे हो ओके आज अभी आप ये रास्ते पे जा रहे हो, ये रास्ते पे जा रहे हो, ये रास्ते से आप देख रहे हो कि ओके इसके 3 रास्ते निकल रहे हैं, तो वहां पे लिखा होगा डाइवर्जन. अब आप 3 रास्ते से कोई एक रास्ते पे आ रहे हो, आपके बाजू में 3 लेन्स है, तो आगे लिखा होगा कन्वर्जन क्योंकि वो 3 लेन्स, राइट. तो ब्लड को भी आपको इमेजिन करना है कि आपकी गाड़ी है, तो ब्लड अगर हार्ट से निकल रहा है तो यहाँ पे आएगा ब्लड ये जंक्शन पे, राइट. तो उसको क्या दिखेगा, कौन सा साइन दिखेगा, कन्वर्जन का दिखेगा या डाइवर्जन का दिखेगा? अगर इधर से ये नीचे ऐसे 2 उसमें जा रहा है, हाँ तो डाइवर्ज हो रहा है, राइट? एग्जैक्टली. अब ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, ये वेन्स में ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है. तो जब ये जंक्शन पे आता है तो उसको कौन सा साइन दिखेगा, यहाँ पे इसको कौन सा साइन दिखेगा, कौन सा? कन्वर्जन का, राइट? एग्जैक्टली, राइट. सो दैट्स व्हाई arteries diverge and vessels veins converge, right? Okay. So then arteries diverge to small arterioles. So यहाँ से ये बड़ी आर्टरी, यहाँ से फिर छोटी and they diverge to small arterioles, right? And then finally they join into a network or the system called capillaries, right? और capillaries से फिर वो कैपिलरीज पूरी बॉडी में ही होती है ना? हाँ. Capillaries are in the full body, but at the very minuscule level. छोटी at a micron structure. Right? The capillary is of one cell layer that functions to nutrients and waste material between the blood and the tissues. Exactly. Okay. Veins are the vessels that carries blood towards the heart, and they are classified according to the size. Venules are small veins that carry blood from the capillaries to the medium-sized veins. Medium-sized veins are the larger in diameter than small veins, and they empty into large veins. Large veins includes the 2 vena cava. Okay. Blood flow. You can also see the structural difference between an artery and a vein. Now, what are the two distinct things you can observe in the structural composition of these 2 vessels? Sir, ये front जो part है, it's divided into 3 categories. Veins. On the vein, okay. हाँ, and arteries. Sir, ये ऐसे है कि arteries में एक ही hole है जहाँ से blood pass होता है. Veins में
भी एक ही होल तो एक ही है बट चलो ये इमेज देखते हैं, इफ यू कैन सी इट मोर क्लियरली। हाँ, ये आर्टरी है, ये वेन है। ओके सो वेन्स में वाल्व Yes, you have a valve. एंड आर्टरीज में नहीं है. हाँ, but on the other hand, you can see vein is much More thinner. veins are much thinner than Arteries. why so? सर ये रीजन वही हो सकता है ना, जैसे वेंट्रिकल और एट्रिया का, कि वेंट्रिकल पुश, वेंट्रिकल में जब ब्लड भरता है एंड देन वो थ्रो करता है तो वो ज्यादा मसल यूज होती है, तो वो ज्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग रहता है. वैसे ही सेम आई गेस वही लॉजिक है, आई डोंट नो, आर्टरीज में और वेन्स में. So imagine you have seen farms में there are pumps, there are electrical pumps जो बड़े बड़े गेज के पंप्स होते हैं जो पानी ये बड़े बड़े डालता है, राइट? अगर उसके ऊपर मैंने पॉलीथीन बैग चढ़ा दी, पॉलीथीन बैग का पाइप लिया मैंने और मैंने वो पंप चालू किया, तो पॉलीथीन बैग का क्या होगा? फट जाएगा. फट जाएगा. क्यों? क्योंकि पानी जितने फोर्स से बाहर आ रहा है वो उसको हैंडल ही, वो फोर्स ही हैंडल नहीं कर पाए, राइट? अब पंप हार्ट है और इसमें से डायरेक्ट ब्लड सीधा आर्टरी में बाहर आता है. अब जब मैंने पाइप लंबा कर दिया, ठीक है, अब वो पाइप का पानी आ गया, अब मैंने पॉलीथीन या प्लास्टिक की पाइप ली, पतली सी, राइट? और वो पाइप में मैंने धीरे से पानी अंदर ड्रेन होने दिया और वापस मैं वेल में डाल रहा हूं, तो वो चलेगा? चलेगा. वो चलेगा, राइट? मोर और लेस. क्यों? क्योंकि उसमें पानी में कोई प्रेशर ही नहीं है. So the polythene can just diverge the water into the well. लेकिन जब वेल से वो पंप जब खींच के पानी को बाहर निकलता है, तो बिकॉज वो इतनी पावर से खींच रहा है कि पानी का बाहर आने का फोर्स ज्यादा है, तो अगर वो फोर्स को हैंडल करने के लिए स्ट्रॉन्गर आर्टरीज यानी स्ट्रॉन्गर वेसल नहीं होंगे तो आर्टरी फट जाएगी. And that's why we have to control hypertension, right? Why? Because hypertension creates more pressure in the arteries than it is designed to handle. And stroke is one of the conditions where a blood vessel of your brain, because of the high pressure, bursts. वो burst हो जाती है, right? Okay, so we know what is arterioles, we know what is venules, we know what is veins, we know what is arteries. Arteries and capillaries. Yes, and we know what is capillaries. Okay. Blood flow. The heart circulates oxygenated blood through arteries to atrioles to capillaries. At the capillaries, the blood delivers oxygen and nutrients to tissues and carries waste product away. Deoxygenated blood returns to the capillaries and travel to venules and then to veins, which return blood to the heart. Done. हाँ, ये तो पढ़ा हुआ ही था सर, है ना? ओके, अब ये आपको थोड़ा सा मुंह जुबानी करना पड़ेगा. टेबल 1-2.
One dash two. Page number 10. अच्छा. Okay. Right? तो एक बार वो देख लेते हैं table, because I think you should, or if you can, you should have a device or some kind of system to remember each and every joint and its movement and the movement created by what muscle. Because after we finish the respiratory system, right, before we go to the applied anatomy, we want to be thorough with that. ठीक है. Right? So joints and movements will not be difficult. What will be a little difficult is muscles that create that movement. सर जैसे एक पढ़ लेते हैं स्कैपुला. चलो छोटा वाला स्कैपुला का ले लेते हैं एग्जांपल. Okay. तो स्कैपुला is upward rotation and downward rotation. Yes. ऐसे राइट सर? ये Yes. रोटेट हो रहा है ना? नहीं ऐसे नहीं, ये शोल्डर गर्डल का मूवमेंट है. स्कैपुला का मूवमेंट अपवर्ड रोटेशन एंड डाउनवर्ड रोटेशन होता है पीछे. अच्छा. हाँ ये. सो सेरेटस क्या होता है? Serratus anterior, they are names of the muscle. So what I want you to do is go on this website, this one, right? And just write the name of the muscle. Dead body smart. Ha. Right. Now, if we look at serratus anterior, let's look at serratus anterior. Got it? This is serratus anterior. Okay. Now, serratus anterior, origin, insertion. So again, here on the scapula, it originates, and on the ribs, it inserts. Okay. Right. And let's look at the movement that it causes. You see how it, when it contracts, it pulls out the scapula. Okay. Right. You see how it's causing upward rotation. When, because यहाँ से चिपक के पीछे से lateral border, or sorry, the medial border of the scapula, interiorly it is attached, not exteriorly, अंदर से. अंदर से, हाँ. Right. So you can see how the movement is. So what I want you to do is, let's say for example, how many joints? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 joints are there. Right. So what we can do is we can take like probably one joint per class. ठीक है. Right. So tomorrow, if possible, if you can go through the shoulder joint and its movement, because shoulder is not a joint, it's a girdle. It is 3 different joints. It will have so many movements. Okay. Right. So on this website, you will be able to see each and everything visually, from the muscles to the movement to the origin to the insertion, everything. ठीक है. Right. And just a quick recap and a quick question: what is origin and what is insertion? Origin is the starting of the. Okay. मतलब origin ये is biceps where है.
ये बाइसेप्स है, राइट? ये हाँ, so तो origin ओरिजिन is कौन the सा है? हाँ, कहाँ से ये start ओरिजिन हुआ है। है। हाँ, हाँ, और ये इंसर्जन है। insertion. ओके, तो यहाँ से मुंबई की ट्रेन है। अब ट्रेन ओरिजिन कहाँ से हो रही है? मुंबई से हो रही है या सूरत से हो रही है? आप कैसे डिसाइड करोगे? सर वो देखना पड़ेगा कि वो ट्रेन कहाँ की है। नहीं, ओके, मतलब वो देखना। या यस सर। हाँ, तो सर वो अच्छा, आपने मोबाइल मतलब वो कनेक्ट कर लिया? हाँ, वो लैपटॉप बंद हो गया। वन एंड आई थिंक दिस मोबाइल थिंग इज वेरी गुड बिकॉज आपका वॉल्यूम क्लियर है, आपका इमेज क्लियर है, स्मूथ है। आई थिंक इफ यू कैन फिगर आउट टू फाइंड अ स्टैंड, आई थिंक हाँ, आई हैव अ ट्राइपॉड, बट आई डोंट माइंड। हाँ, ऐसे भी चलेगा, बट मुझे इसमें इमेज नहीं दिखेगी। जो आप खोलोगे ना, हाँ, एग्जैक्ट। दैट विल यस। तो सर मतलब वो डिपेंड करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहाँ से चालू होगा। वो आपको है कि कहाँ। अच्छा, हाउ मच हैव यू ट्रैवल्ड इन द ट्रेन? लॉट ऑफ टाइम्स। लॉट ऑफ टाइम्स, राइट? तो कोई एक ट्रेन के नाम का आप एग्जांपल दो। राजधानी। दूसरी कोई ट्रेन? ट्रेन तो सर कौन सी, कोई कोई सी भी सर, कोई भी हाँ, एक्सप्रेस बोल दो। so हाँ, so let's say for example बांद्रा अजमेर, आई डोंट नो। राइट? ठीक है। मैं तो ऐसे ही हाँ बोला, पता नहीं ऐसी ट्रेन है कि भी नहीं, बट हाँ most trains are given such names, right? Bikaner Express, right? Why it's हाँ, known as Bikaner Express? Because it starts from Bikaner and then comes back. हम्म बांद्रा अजमेर, या तो अजमेर बांद्रा, so it starts from Bandra and moves towards बांद्रा। Ajmer, right? Similarly, origin insertion in our body has the same concept, which is the insertion in most parts will move towards the origin. The origin will not move towards the insertion. That's how we can differentiate which one is the origin and which one is the insertion. When you're doing bicep movement, so let's say I'm doing bicep movement, my insertion is moving towards my origin. My origin is not moving towards my insertion. Right? So when one point moves towards the other point, the moving point is usually pinned down as insertion. ओके। Right? Okay. So let's quickly look at the respiratory system. Divisions. The upper respiratory tract consists of the nose, including the nasal cavity, and the paranasal sinuses, the pharynx and larynx. Pharynx and larynx.
Can you see this screen on your mobile? Yes. अच्छा, ओके, तो इसमें मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम खोलता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा. ओके, चलो. So the upper respiratory tract consists of a nose and paranasal sinuses, sir, pharynx and larynx. Pharynx and larynx. Pharynx and larynx. The So lower in the respiratory image, if you can see here, this becomes your pharynx here, and this becomes your larynx. Pharynx and larynx. Okay, this is nose. Okay. तो सर मतलब जो अपन ऐसे नहीं देखते, अपन ऐसे मुंह खोलेंगे और हल्का सा वो कर्व दिखता है, so that is pharynx. हल्का सा कर्व, maybe. करके देखते हैं तो हल्का सा पीछे से कर्व दिखता है, एक स्किन होती है वो तो आई. हाँ, क्योंकि दिखेगा नहीं. I think you'll have to go inside and see it. Okay. So lower respiratory tract consists of a trachea, the lungs, which includes the bronchi, bronchioles, and alveoli. Lungs are the organs or respiration where oxygenation of the blood occurs. They occupy the pleural cavities and are covered by the pleural membrane. The right lung. Covering of the bone is periosteum. Covering of the muscle is epimysium, endomysium or perimysium, depending upon the layer. And covering of the lung is called pleura. Or the pleural membrane. Okay. The right lung has 3 distinct lobes: superior, middle, inferior. Left lung has 2 lobes, superior and inferior. The apex of the each image, the right lung has 3 distinct lobes: superior, medial or middle, and inferior. And left lung has 2, superior and inferior. Okay. The apex of the each lung extend into the base of the neck above the first rib. So apex, base of the neck. The base of the each lung rest on the diaphragm, which is the respiratory muscle that separates the thoracic from the abdominopelvic cavities. Abdominopelvic cavity is separated by, from the thoracic cavity is separated by diaphragm. So diaphragm, अगर मैं ये diaphragm को नीचे खींचूंगा यहाँ से, let's say माउस को मैंने diaphragm से अटैच किया और ये मैंने इसको नीचे खींचा यहाँ से, तो क्या होगा कि लंग्स में एयर अंदर खींचेगी. It's like a syringe. सिरिंज में क्या होता है कि वो उसको भी तो डायफ्राम ही बोलते हैं, रबर बल्ब, ब्लैक कलर का जो होता है, राइट? होल्ड ऑन, आई माइट हैव अ सिरिंज हियर. नहीं, रोजी ने तोड़ दी. वो we had got that too. जब वो बीमार हुई थी ना, तो उसको दवाई पिलाने के लिए लाए थे. तो हाँ, मैं समझ गई. जो सिरिंज के अंदर जो व्हाइट रेड ब्लैक रबर होता है वही. हाँ, बस वही. So that is also known as diaphragm only. Okay. Because वो जब वो आप उसको खींचते हो पीछे, तो अंदर ब्लड और वाटर whatever
you want to suck in comes in. So इसको भी जब मैं ऐसे नीचे खींचूंगा यहाँ से, तो यहाँ से जो भी चीज होगी वो अंदर आएगी, right? Okay. So that's why diaphragmatic breathing is the breathing that you should do, because then when the diaphragm works to suck in the air, it sucks in a lot of air and oxygenates your body quite efficiently and effectively. And the more oxygen, धीरे धीरे हम जब आगे physiology के बारे में पढ़ेंगे, so the more oxygen your body has, the more fat it will burn. वो aerobic system के बारे में पढ़ेंगे तब we'll explore. But sir, अपन नॉर्मल ब्रीदिंग अपन वर्कआउट करते हैं, ठीक है, रनिंग में आपको आप रख सकते हो ध्यान, बट जब अपन कोई फंक्शनल करते हैं, बट फंक्शनल में सर वैसा डायफ्राम नहीं मैम. ओके, सो हियर इज द थिंग, इट्स नॉट अबाउट उसको कॉन्शियसली करना, इट्स अबाउट ट्रेनिंग इट at a level where even subconsciously only diaphragmatic breathing is happening, or diaphragm is working as a primary breathing muscle. For example, you take a small baby. If you see an infant or just born baby, right, you will see that only his stomach is inflating and deflating while it is breathing. Thoracic cavity में इतना movement नहीं हो रहा है, सिर्फ abdominal cavity में movement हो रहा है. क्यों? क्योंकि we as humans or as Homo sapiens are designed, by default setting is to use diaphragm as a primary breathing muscle. So if you engage yourself into physical activity and keep trying to push your limits, your body will automatically use diaphragm, because at the limits your body needs so much oxygen. So then if you keep repeating that particular action day and night, over and over, naturally your body says, you know what, why do I keep switching my primary breathing muscle? Then the natural by default वो यही बन जाता है कि आपका diaphragm is your breathing muscle. अगर आप कोई भी एथलीट को ले लो, अगर आप वो सीरियस एथलीट है तो उसको अगर आप देखोगे तो नेचुरली वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ही कर रहा होगा. He may not even know the science behind it. Right. So yeah. So if you see a very, very trained athlete, or an athlete who claims to be highly trained, and the first thing that you notice that he's not breathing through his diaphragm, he's breathing through his chest, then you know that his limitations are very, very low. He may claim to be an athlete, but he's not an athlete. क्योंकि अगर डायफ्राम ही एक्टिवेट नहीं हुआ है तो फिर आपने कौन सा चैलेंज किया? तो ऐसे पता कैसे चलेगा, मतलब अगर आप अगर आपके साथ तो मैंने वो एक टेस्ट किया था, आपने किया था, बट हाँ, उससे मूवमेंट बॉडी मूव करती है तो उससे पता चलता है. हाँ, so when your chest was expanding and contracting, and rather than that, if you see that there is more volatility in your abdominal movement, then you see, or then you notice that no, this banda or this person has been training rigorously. But when there is a lot of volatile movement in your chest, so either that person is training vigorously in the right direction, or the person is training vigorously in the wrong direction, or probably is not training at all. And that's where marathon athletes in here in Surat that I've encountered, I have seen कि वो कैसे मैराथन एथलीट्स हो सकते हैं या खुद को कह सकते हैं जब उनको मैराथन इज बेसिकली अ गेम ऑफ ऑक्सीजन. तो जब उन्होंने ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम ही एक्टिवेट नहीं किया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप मैराथन एथलीट को मिलो तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखना. उसके ब्रीदिंग पैटर्न से आपको पता चल जाएगा कि हाउ गुड और हाउ probably professional this guy is, or how many rigorous activities he has done as far as marathon athletics are concerned. All right. Okay, next. Okay. Airflow and gas exchange. Air enters
the respiratory system through two external nerves and proceeds through the nasal cavity and sinuses. The air is filtered and moistened before entering into the nasopharynx at the internal nares. Cilia line the nasal cavity and the function to sweep mucus and to trap microorganisms. So, what is this nares? Yeah, two opening. Okay. Air enters the respiratory system through two external nares, proceeding through the nasal cavity and sinuses. Air is warmed, filtered, and moistened before entering to the nasopharynx and the internal nares. Cilia line. So, cilia line? Cilia are small hair-like structures within your nose. Okay. Yes. Okay, that is cilia. Yeah. They line the nasal cavity and function to sweep mucus and to trap microorganisms. The incoming air then passes through the pharynx. Incoming air then passes through the pharynx. The pharynx extend between the internal nares and the entrance to the larynx and esophagus. The pharynx is shared by the digestive and respiratory system. Incoming air leaving the pharynx passes through a narrow opening in the larynx called the glottis. Air movement causes the vocal cords to vibrate, generating sounds. From the larynx, the incoming air enters the trachea. सर इतना ही सर मतलब आगे तो क्या इतना ही पढ़े थर्ड पॉइंट तक एक बार इतना समझ लेते हैं. हाँ ओके सो यहाँ पे नेसल कैविटी में एयर का क्या होता है वो उन्होंने बताया कि एयर को अगर ठंडी है तो गर्म यहाँ से जैसे पास थ्रू होती है तो ऑल द टेम्परेचर इज ट्राइंग टू गेट द एयर इनटू द बॉडी टेम्परेचर बिकॉज inside the more deeper you go the more sensitive the system gets towards temperature change, right? So then the air is warmed, filtered and moistened because a dry air will not probably be able to conduct good oxygen transportation or oxygen exchange. So the air also has to be moistened, right? So that is the process that happens there. Then the cilia lining in the nasal cavity will sweep out the debris, kachra hai, ye hai, wo hai, right? That's how we get those boogers, you know. Right? Then the incoming air then passes through the pharynx. Now pharynx, it divides and it acts like a gate between the trachea and esophagus. As far as air is concerned, there is no problem. But as far as food is concerned, the food cannot enter the respiratory tract or the trachea, because if that happens, then there is a serious condition. If air goes in and out of the stomach, it's okay sometimes. Okay. Right? So that is what the pharynx does. It acts as a gate. Then the incoming air leaves the pharynx, passes through a narrow opening in the larynx called the glottis. Now glottis is where the sounds are, you know, glottis and epiglottis are the way, it's like your sound box. Okay. Right? In My Name is Khan, the guy keeps saying Khan from the epiglottis. You know, to vibrate the epiglottis. You know, kha, kha. Right? Then what happens post that? Incoming air goes into larynx or the glottis. Air movement causes the vocal cords to vibrate. Okay, good. Generate sound. Okay, good. From the larynx, incoming air enters the trachea. अब ट्रेकिया में यहाँ पे तो यहाँ तक तो एयर आ गई और एयर ने क्या किया, हमने प्रोसेस समझ लिया वहां तक, राइट? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद from the larynx, incoming air enters the trachea. The trachea extends from the larynx into the lungs. So from the larynx, the trachea extends into the lungs. So sorry, मैं पेन से कर रहा हूँ. From the larynx, the trachea extends into the lungs, right? You can see here. Right? And the C-shaped cartilage
of the trachea performs several functions. तो ट्रेकिया का सी शेप कार्टिलेज अगर हमें देखना है तो इमेज को चेंज करना पड़ेगा। इसमें अगर दिखता है तो नहीं दिखता है। ओके, लेट्स लुक एट ट्रेकिया। ओके, हाँ, तो ये हो गया आपका ट्रेकिया। अब इधर ट्रेकिया में ये आप देख रहे हो सी शेप कार्टिलेज है ये। इट्स लाइक आपने वॉश बेसिन का पाइप होता है ना, तो उसमें कैसे दैट इज सो दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड और कोलैप्स, बट हाउ इफ यू partially collapse it, how it makes a C shape interval. Right? So those C-shaped cartilage perform few functions which are to protect, support and maintain an open airway. So अगर वो cartilage होगा so it's very difficult for the trachea to collapse, and we don't want the trachea to collapse at under any circumstances, because if the trachea collapses then the airflow stops, we are Ram Nam Satya Hai. Right? So the ring, the C-shaped cartilage, it holds the trachea open. Right? Then prevents overexpansion as well. If we are breathing very heavy, we don't want the trachea to expand like a balloon and then cause disruption in other structure. So also prevents overexpansion. Right? And it allows large masses of food to pass through the esophagus. So उसके आगे जो esophagus है ट्रेकिया के पीछे जो esophagus है जहां से फूड पास होता है, राइट, तो वो इजीली फूड पास हो जाए इसीलिए होता है। कैसे इजीली हो जाए, मैं कैसे बताऊं आपको, वो मेरे को ये लास्ट पॉइंट है ना, जब हम मिलेंगे ना तब मैं आपको वो प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, तब पता चलेगा। ठीक है, राइट, ओके, नेक्स्ट। ठीक है सर, इतना की करे क्या, क्योंकि मेरी 3 मिनट में क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओह यस, अरे बहुत नजदीक आगे हमें छोड़ना पड़ा। हाँ एक्चुअली मतलब स्टार्ट हो जाएगी, लोग आ ही जाएंगे। कोई बात नहीं, ओके। ये सर मैं एक बार वापस पढ़ लूंगी, वापस गो थ्रू कर लेती हूँ मैं इससे। यस और ये इस वाला पॉइंट भी पढ़ लेती हूँ। ओके, और फिर अपन स्टार्टिंग फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से कर लेंगे एंड देन वी मूव आगे। हाँ, लेकिन आप ये जो वीडियोस है उसको देख के थोड़ा रिवीजन करना चालू रखो, है ना? ठीक है सर, ओके मैम, चलो, ओके देन, टुमारो, बाय बाय।